first of all, welcome to INS. Thank you for having me. And मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी बॉलीवुड की जर्नी को, मतलब आप जाने भी और जाने ना से आप आई हैं बॉलीवुड में, और मतलब कि अभी तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र अभी तक इट्स बिन ब्यूटीफुल. मैं जो काम करना चाहती थी लाइफ में मैंने वही चूज़ किया. एंड लकीली इवन दो मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती थी, स्टिल मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं. एंड बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. So it has been a good journey. It's been a slow journey, but I'm still here. So I love this place. I'd love to be here. I mean, I love being here. क्या जाने भी और जाने ना के बाद आपको लगता है कि आपको डिजर्व स्टारडम मिला है? I'm still getting there. I know there's a lot more I want to do. I'm hungry for better, much better roles, more work. I'm happy with the work that's coming my way, but I know there is a lot more to me that I can offer to the audience. So I'm still getting there. आप एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी करती हैं, तो क्या कभी फुल म्यूजिक एल्बम का प्लान है? डेफिनेटली है. बहुत सालों से इट हैज़ बिन ऑन द बैक बर्नर. इनफैक्ट मेरी जर्नी इस इंडस्ट्री में पहले सिंगिंग से ही शुरू हुई थी. मैंने पहले चैनल वी पॉप स्टार्स 2 में मैं फाइनल्स तक पहुंची थी इन सीज़न 2. सो तब से मतलब पहले म्यूज़िक ही था. आई मीन बचपन से जब से मैं 3 साल की थी तब से मैं स्टेज पे गाती थी स्कूल में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में एंड ऑल दैट. आई यूज्ड टू विन एंड एवरीथिंग. एंड but I took up acting more seriously, so my journey in acting was, I was more focused out there, but I have been getting a calling for my music back. And I mean, जब मैं acting कर भी रही थी उस time से I have been learning classical music from Sucheta Bhattacharya ji ma'am. And तो मेरा रियाज रहा है इतने सालों से. तो I think now is the right time where I'm trying to explore that side professionally as well. In fact, मेरा पहला single पिछले साल ही release हुआ था called Aao Na. It's there on all streaming platforms, music streaming platforms. And और भी singles आने वाले हैं. And I'm really looking forward to performing live very soon, like do a live singing show and stuff. आप इतने सारी लैंग्वेज में काम किया, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा टफ लगी आपको? और क्योंकि आप सबसे कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, बॉलीवुड या टॉलीवुड? सबसे ज़्यादा टफ जो मुझे लैंग्वेज लगी है इतनी सारी, आई मीन आई हैव डन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, मराठी. Marathi was easy for me because it's my mother tongue, and बचपन से I've heard Marathi. So and मुझे आती है. मैं ग्रामेटिकली मैं मिस्टेक्स करती हूँ बिकॉज पापा आर्मी में थे. हम सब जगह रह चुके हैं, नॉर्थ में ज़्यादा रहे हैं, एंड मॉम डैड मध्य प्रदेश के हैं, तो मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी थी. पर मराठी अच्छे से आती थी. लेकिन आई थिंक तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर ऑल टफ. बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट तेलुगु मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था बिकॉज पहली फिल्म में मैंने बहुत मेहनत की थी. हर एक शब्द का मीनिंग, हर एक शब्द का मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन मैंने उसको अच्छे से देवनागरी में लिखा था. एंड आई हैड लर्नड इट, तो मुझे बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आने लगा था. एंड बिकॉज बचपन में संस्कृत सीखा हुआ था तो उसकी वजह से उसके बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस मुझे समझ में आ गए थे. तो आई थिंक माई सेकेंड फिल्म एंड माई थर्ड फिल्म इन तेलुगु इट बिकेम ईजियर फॉर मी. But I think out of all the 4 South languages, I think Malayalam was the toughest because I think that is like वो बहुत words को, I mean like I take a lot of pride and I'm good at learning languages, but I think that is one language I really struggled with. इंडस्ट्री की बात की जाए तो जैसे कौन सी इंडस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया और क्या डिफरेंट है यहाँ की इंडस्ट्री में काम करना और साउथ की इंडस्ट्री में काम करना? Because Hindi is my comfortable language. मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ऑफ कोर्स हिंदी में रही हूँ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कोर्स. बट मज़ा मुझे सारी इंडस्ट्रीज़ में आया बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर लैंग्वेज शुड नेवर बी अ बैरियर. एंड मुझे मज़ा आता है नए लैंग्वेजेस सीखने में. इट्स जस्ट दैट बिकॉज हिंदी में वो एक्स्ट्रा जो मेहनत करनी पड़ती है, लाइक जब भी मैं साउथ लैंग्वेज फिल्म्स लाइक एनी अदर लैंग्वेज फिल्म्स आई डू, मैं 1 वीक लेती हूँ टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन. एंड ऐसे वो
मसल मेमोरी में बैठ जाए कि व्हेन आई एम गोइंग टू परफॉर्म द सीन, मेरे दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि अगला वर्ड कौन सा है, अगला सेंटेंस कौन सा है. इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ माई सिस्टम. तो उसकी मेहनत बहुत लगती है. एंड देन आई हैव टू गो परफॉर्म like without thinking what is the next line and just emote. So वो step हिंदी में minus हो जाता है मेरे लिए, because हिंदी because comfortable है. I know what I'm saying very well, every word. So it's more comfortable for me. सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया का इतनी एक्टिव नहीं होती जितनी और एक्ट्रेसेस होती हैं. और आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया जो है एक यंग एक्टर्स के लिए स्पेशली जो है उनके लिए एक अच्छा टूल है कि मतलब कि बहुत I understand what you mean. I think social media is a double-edged sword, and I think, like, you know, first I was really quite. I mean, first I was very rebellious when it came to social media. I was like, I am an actor. I don't really need to constantly put things out there just for the heck of it. मतलब मेरे पास अगर कुछ content है डालने के लिए तो मैं डालूंगी, नहीं है तो नहीं डालूंगी. I did not identify myself as an influencer. I'm an influencer by default because I'm an actor. So I wanted to spend, I mean, I want to spend more time in working on my craft and doing other things that I really like doing, which also help my craft. मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक है, गाने का शौक है, like cooking का शौक है, reading का शौक है. तो and social media has become work, you know. So तो मैंने बहुत टाइम तक रिबेल किया इसके बारे में. आई वॉज लाइक कि नहीं, आई डोंट हैव टू लाइक यू नो ऑलवेज डू एवरीथिंग व्हाट एवरीवन इज डूइंग. मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगी, नहीं लगेगा मैं नहीं करूँगी. सो आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दैट. बट slowly as time has gone by, I have realized that I can actually use social media as a power tool to connect with my audience. And I'm slowly doing that. I'm more active, much more active than I ever was before on social media. And so yeah, I'm now using it more like a power tool instead of cribbing about it ki like, you know, ye nahi karna, wo nahi karna and all that. It's okay. I mean, like, now I have learned to enjoy it also. But yeah, I try to spend as less time as possible because there's so much more that I want to do apart from social media. मैम, आपकी फिल्म जो है पुणे आई है रिलीज होने वाली थी. जी. तो 64 जी जी. तो हाउ वाज इट वर्किंग विद अमित साहब जिन जरा, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस over there? और आप कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए क्या है. It was fabulous working with Amit and Jim. In fact, Jim के साथ मेरी पहली फिल्म है, अमित के साथ मेरी सेकंड फिल्म है. पहले मैंने बारोट हाउस में जिम के साथ काम किया था, जो सेम डायरेक्टर ऑफ बारोट हाउस, बाग्स भार्गवा, हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड दिस फिल्म, बट दिस टाइम in collaboration with Rahul Dakuna. So Amit and I have had a very comfortable bond on set. And he has been a very, very supportive co-star. He's so encouraging to all his co-stars, I mean, co-actors around him. He's very, very encouraging. And it's very pleasant having him around. And of course, जब मैं around होती हूँ तो अमित के अंदर का, you know, जो शैतान बच्चा होता है ना, वैसे कूद के बाहर निकलता है. So he's constantly pulling my legs on set. And I mean, at my cost, but everyone has a lot of fun. But it's a lot of fun having Amit around. He's lovely. And Jim is really like, I have always admired his work so much. उसका जितना भी काम मैंने देखा है अभी तक, but actually working with him was a wonderful experience. My respect for him has grown much more as an artist. You know, जिस तरह से वो एक सीन को कितने अलग अलग ढंग में like सोच सकते हैं. Like, he's got so many ideas. He's bubbling with ideas. So I really enjoyed working with him. Wonderful guy, and what a lovely vibe. आपको लगता है कि स्टार के जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जो आउटसाइडर्स हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, जो एक्टिंग में स्पेशली जो है, जो मतलब रियली एक्टर्स जिसको बोलते हैं, हाँ, उनको इतना काम नहीं मिलता है जितना स्टार के. So इसके बारे में मैं यही बोलूँगी कि
of course, the star kids do get more opportunities. Let me put it that way. They do get better opportunities in bigger production houses, and I don't want to blame them for it. I think they are born with a lot of privilege. Obviously, you know, when you're born in a family which has been in the film industry for so many years, and like their parents are stars, they are best friends with one of the few of the top directors and producers in the industry. Obviously, a parent will want the best for their children. They will want to give them the best start, and they know them. The producers and directors know them so closely, like family relationships. So, of course, they want to push them and promote them. But at the end of the day, I think it's the audience that accepts them or does not accept them. And so yeah, I mean, I see some unfairness happening out there. I know exactly what you mean. But I think all of us come with our own struggles. Like, in fact, even the social media influencers you're talking about, यार वो भी अपनी मेहनत से ही आगे बढ़े हैं. उनको लोग लाइक करते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. Yes, it's upsetting the actors who have worked so hard and are such talented actors who have to worry about तुम्हारे कितने followers हैं like Instagram के ऊपर. उसके accordingly अगर casting होती है तो it is very hurtful, but as I said before, I think like it's important to also change perspective where we start realizing let's use it as a power tool. But I know सब नहीं कर पाते हैं, but yeah, I mean, I do understand there's a little unfairness out there, and I hope that changes. But I think all the best directors that I know, I don't think any of them cast on the basis of the number of followers. The topmost, the best directors in the industry, they would only look at the talent of the individual. So yeah, I mean, like, I don't know if I've answered that. Yeah. Okay. बॉलीवुड में ग्रुपिज्म और कैंप्स का असर आपके करियर पे पड़ा है? Maybe. Because I don't see myself in any particular camp in the industry, and like, because you know, एक shooting जब होती है तो इतने सारे महीनों के लिए सब इकट्ठे रहते हैं, तो mostly people like to work within their friends and their circle. And so maybe if I was in one of the circles, then maybe I would have had better opportunities. But I don't want to crib about it. I think I've had my own journey, and it's been a satisfying journey. But I'm working harder. I am still getting where I need to go. मैम, आपने जैसे आपने कहा कि मतलब एक साथ जब काम करते हैं तो इतने दिन साथ में काम करके इतने तो आपकी जो पहली फिल्म जाने दिया जाने, हाँ, उसके दोस्त आपके साथ या डायरेक्टर के साथ आप टच में हैं अभी भी या क्या है? So I am in touch with like almost every. Okay, I'm in touch with Abbas and Paki and Imran में बहुत कम मिल पाई हूँ उससे फिल्म के शूट के बाद. Genelia से in a few events I keep bumping into, but yeah, there are some sets especially where I have really made a good friend circle. And like मैंने एक फिल्म की थी Warning में हमारा जो पूरा ग्रुप था, Varun Sharma and Jitin Gulati and like Gurmeet Singh, our director, Madhurima Tulli. So we all kind of really got along very well during that shoot. So we are still friends. So I mean, yeah, there are a lot of projects where I have made some really close bonds with people. So yeah. मैम, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई नेटवर्क किड्स है तो मतलब इंडस्ट्री में आसानी से काम मिलता है, बट एक एग्जाम्पल जीता एग्जाम्पल इमरान भी है, मतलब कि वो आए थे इंडस्ट्री में, उन्होंने 2-3 फिल्म की बट कुछ चले नहीं और फिर वापस सेटबैक करना पड़ा उनको. तो क्या कहिए उसके बारे में? मैं इतना ही कहूँगी कि whatever Imran chose to do was his personal choice. He had very good opportunities, and still he has so many fans, and people are waiting for his comeback. I'm waiting for his comeback. I would love to work with him again. So I think that was more of his personal choice, and I think this is a question is best asked to him than me. मैम, लास्टली आप ऐसे किसी डायरेक्टर के एक्टर के साथ काम करके डिसअपॉइंटमेंट हुआ था? आपको लगता है मैं बताऊंगी आपको? आपको लगता है मैं बताऊंगी? No, of course I've had disappointments with a lot of people in the industry.
But I choose not to talk about it because they're not important to me anymore. So. मैम एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि ग्रैंड मस्ती जैसी कॉमेडी फिल्म करने के बाद मतलब कि जो मतलब कहते हैं लोग कि थोड़ा बहुत चीप कॉमेडी थी उसमें, तो मतलब क्या वैसे रोल फिर से एक्सेप्ट करेंगी? यार cheap comedy or not, I did not see it. I did not see it like that. For me, when I did Grand Masti, I saw the lovely team I worked with. I worked with Indra Kumar sir, who has made some amazing films. Masti is beautiful. Like, it's a very funny. It's a great franchise to be a part of. And uski jo star cast thi, and the whole, I remember the whole film with such fond memories. And आप कोई जो भी बोले कि cheap comedy, whatever comedy, but मैं आपको बताऊंगी कि I remember मैं थिएटर में देखने गई थी ग्रैंड मस्ती, चुपचाप, like, you know, I mean, like, once the entire house was full, that's when I entered, and I was sitting amongst the audience and watching the reactions and everything. यार कोई कुछ भी बोले, I know there were two groups sitting, one this side, one that side. One group was of these girls and guys from college, and one on my side was this entire group of some ladies, this group of ladies who had gone to watch it, and they were falling off their chair laughing. Now, I just want to be a part of entertaining films. So I will not have a problem if a film is entertaining. I'm not going to say no to that because of whatever people think. If I like the script, if I like my role in it, if I like the character I'm playing in it, I don't think I will have a problem with that. मैम, आपकी इमेज जो है स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर बन गई है, और इस वजह से कि आपको बोल्ड और डिफरेंट रोल्स नहीं मिलते हैं। Is that a question or you're telling me? क्या वजह आपको लगता है कि वो ये सिर्फ इमेज मतलब गर्ल नेक्स्ट डोर की इमेज जो है काफी लंबी चल रही है आपकी? I think so. People react to me as a person more. So unfortunately, like, I'm an actor. I want to perform many different shades of roles and characters, and I know I can do it. And you know, unfortunately, हम एक creative industry में हैं, but casting करते time, unfortunately, in my case, people have not been that creative. They haven't tried to put me in very interesting shades of characters, which even audience will really enjoy watching me perform, because I know I can do so much, like, you know, with performance. And so I really wish people kind of break that mold in their head about me. Because see, when I go to meet people, I meet them with who I am. So whatever perception they have about me, they'll try to put me in the same kind of role. No, but there's much more to me than what meets the eye. And but having said that, I must tell you, our director Bugs Bhargava, जिनके साथ मैंने बारोट हाउस की थी. So he was like one director who has not limited me as an actor according to just what, like, when he meets me, he sees me as an actor, as somebody who can do so much more. So उनके साथ मैंने 3 फिल्में कर ली अभी तक. तो पहली फिल्म थी हमारी बारोट हाउस. आई रिमेंबर बारोट हाउस के लिए जब मैं मीटिंग के लिए गई थी, उन्होंने एक मीटिंग में विदाउट ऑडिशन he had that faith in me that मंजरी ये रोल कर पाएगी. And as compared to that whole sweet next जो आप बोल रहे हैं, मेरा जो image था, ये जो character था in बारोट हाउस was a very deep, very complex role. It was a very intense role where I was losing, like, one by one, my children are getting murdered, and how this woman is losing her sanity one step at a time, you know. So it was that kind of a very complicated, complex role, and he saw me in that without an audition. So that kind of gave me that added responsibility as an actor, that I have to give it better than my best. So I think after that film, like, Bugs has like kind of given me some really interesting roles. So there's another film called Pigeon I've done. So we'll talk about that when it's releasing. But currently, Pune Highway में
you will see me in a very different role where you have not seen me. I think आपने trailer में शायद देखा होगा. So you might see that little aggressive side, which I'm not a violent person in person, but on screen I can. So yeah, so I'm very grateful to him as a director, and I really hope after this film and after a few more other films that I've done, like I really hope now directors and the industry starts believing more in me in varied roles and not limit me according to the limits of their minds. So